is made up of, which is reduction plus oxidation. And this says if anything is getting oxidized, something has to get reduced. That means अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो किसी को लेना भी पड़ेगा. अब आपने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किया है, बट वी विल बी डूइंग इट in terms of loss of electron, gain of electron, increase in oxidation state, and decrease in oxidation state. There are many definitions in many ways in which you can do the redox reactions. I'll list them. One is reduction and another is oxidation. So the simplest thing which you would do is addition of hydrogen is reduction and addition of oxygen is oxidation. Or you can say removal of oxygen is reduction and removal of hydrogen is oxidation. But this is not the only element which determines what is getting oxidized and what is getting reduced. Hydrogen, it portrays any electropositive element. Do you understand what is electropositive element? No. I think so. So listen to this. Which element is this? What is its atomic number? 11. What is its configuration shell-wise? 281, right? This is 11 and this is 281. Then we have magnesium, which is 282. Then we have aluminium, which is 283. And we have silicon, which is 284. Then we have phosphorus, which is 285. Then we have sulfur, 286. Then we have chlorine, which is 287. And then we have argon, which is 288. This is the last shell configuration of elements. And these are the valence electrons, last shell electrons of any element. जब तक ये elements अपने original state में, atomic state में है, they do not carry any charge, right? Sodium, as such, उस पे कोई charge नहीं है. But NaCl में we have Na positive and Cl negative ion. तो ये charge कैसे आते हैं? You should know the concept. क्योंकि इसी charge से you would know कि वो charge लाने के लिए कोई oxidize कर रहा है या reduce कर रहा है, कोई दे रहा है electron या ले रहा है electron. So we'll start with that. Sodium में क्या है? 11 atomic number है जो उसका, which means उसके पास 11 protons हैं, which is positive charge, and 11 electrons है, which is negative charge. The same number of positive और negative charge होने की वजह से उसके ऊपर overall कोई charge नहीं है. जब तक वो अकेला है, उस पे कोई charge नहीं. Similarly, if you talk about chlorine, which is 17, it has 17 protons and 17 electrons, overall neutral, और इस पे कोई charge नहीं. But when the sodium and chlorine combines to form NaCl, इन दोनों के पास charge है. तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों के पास charge है? पहली बात, remember this, chlorine never exists in monoatomic form. It is a gas. It exists in diatomic form. Chlorine हमेशा Cl2 के form में मिलेगा. You won't find it in monoatomic form. Cl के form में नहीं होता है, right? But हमारा focus इस वक्त क्या है कि इन दोनों में क्या change आएगा? क्यों ये ऐसा करेंगे कि इस पे positive और negative charge आ रहा है?
और व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। यहां पर आपको ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, फिर भी इसमें से एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक चीज रिड्यूस हो रही है। क्यों हो रही है वो भी समझना है, और क्या उसमें चेंज आ रहा है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ये भी समझना है। तो इसके लिए पहले तो ये इस पे जीरो चार्ज, इस पे जीरो चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। मैंने आपको पहले बताया ये न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव इसके पास था। लेकिन अगर कोई चार्ज बच रहा है या कोई चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कुछ इसमें कम ज्यादा हुआ है। कैसे होता है वो कम ज्यादा? लेट्स सी, सोडियम इज 11, we said it is 281, right? क्या है 281? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कॉल इट। इलेक्ट्रॉन्स है ये, इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है, 11 नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास 3 शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज फुली फिल्ड, व्हिच मेक्स इट स्टेबल। एनीथिंग जो भी फुल होगा दैट इज स्टेबल। सेकेंड शेल में वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन हैव इन सेकेंड शेल, वो भी इसके पास है। बट थर्ड शेल, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्टेबिलिटी खराब होती है। जब वो न्यूट्रल है फाइन ठीक है, लेकिन अगर उसको किसी के साथ कंबाइन करना है तो उसको ये इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा, बिकॉज दैट विल मेक इट स्टेबल। सोडियम 281 में से अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जो सोडियम के अंदर 11 पॉजिटिव चार्ज है उसका वो कुछ नहीं करता। ओनली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन कंबाइनिंग विद ईच अदर। जैसे Na और Cl कंबाइन किए ना, तो उनमें उसका न्यूक्लियस का रोल नहीं है। लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग, उनका एक्सचेंज चल रहा है या उनमें कुछ चेंज चल रहा है जिसकी वजह से वो आपस में कंबाइन करेंगे। दैट मीन्स protons will remain same, but if it loses one electron, how many electrons will be left with sodium? If it loses the last one, कितने बच जाएंगे सोडियम के पास? 10. And what is the charge on electron? Electron. Negative. Electrons are negatively charged. You should remember this. प्रोटॉन पे यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस जो बनाते हैं ना पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स उसमें प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए वहां पॉजिटिव लगाते हैं, राइट? सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, उसको कोई कुछ नहीं कर रहा। जब भी किसी को कंबाइन करना है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही यूज होते हैं, राइट? सो अगर इसके प्रोटॉन सेम रह रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, दैट मींस इसके पास 11 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव चार्ज है। ऐसा हो रहा है? हो रहा है ऐसा? Yes. तो अगर आपके पास 11 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव चार्ज है, थोड़ी सी मैथ्स लगाओगे तो आप बताओगे आपके पास क्या चार्ज बच जाएगा? +1, राइट? So, sodium carries one positive charge when it loses this last electron. And what is the reason to lose this? Because इससे उसकी पिछली शेल completely fill हो जाएगी और वो stable हो जाएगा. So it is very happy to lose electron. Moreover, sodium is a very reactive metal. Metal की characteristic property होती है that it can easily lose electrons. ठीक है? जो आपने कभी देखा है घर पे एसी लगा, कौन सी वायर उसमें होती है एसी में? स्पेशली आपसे वायर मंगवाते हैं, विच मेटल? वायर्स में कौन सा मेटल होता है? कॉपर मेटल है ना। मेटल का क्या, उसमें क्या है ऐसा मेटल में कि कॉपर की वायर यूज करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स, उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। वो अलग मेटल है, वैसे ये बहुत अलग मेटल है,
पर इलेक्ट्रॉन का आपको याद रखना है आगे के लिए भी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है इट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, या उसी के कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे नॉर्मल वायर्स है उसमें भी कॉपर वायर्स हैं, ठीक है, बिकॉज उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास जिनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो सिमिलरली सोडियम मेटल है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, all first line of periodic table, they are very good metals. All of them wants to give off their electron which is present in large shell, right? और अगर वो दे देंगे अपना इलेक्ट्रॉन they'll carry one positive charge, and electron का देना, that is loss of electron, that is termed as oxidation, right? So इसमें सोडियम जो है that is getting oxidized, Na0 से 1 positive बन रहा है, this is loss of electron and this is termed as oxidation, ठीक है? Similarly, now we talk about chlorine. This is 17, this is 287, the electronic configuration, which tells us that it has 17 positive charge in the center and it has 2 electrons in first shell, 8 electrons in last shell, second shell, and 7 electrons in last shell. 17 protons and 17 electrons, which makes it neutral. So we have 0 charge on chlorine atom. अभी मैं एटम की बात कर रही हूँ, उस रिएक्शन में जब वो कंबाइन करेंगे तो Cl2 के फॉर्म में ही करता है, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एटम. सो it has 7 electrons in its last shell and we can have maximum of 8. तो वो 7 तो लूज नहीं करेगा, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करना is not possible for chlorine. So what it does is it accepts 1 electron. Can you tell me क्या फायदा होगा उसको एक इलेक्ट्रॉन लेके? Why will it accept 1 electron? क्या फायदा होगा क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेके? Stable हो जाएगा because उसकी last shell will get complete. So it accepts 1 electron and this becomes 288. And will there be any charge on chlorine now? Will it carry any charge? Yes. Which charge? Because it had 17 protons. This will remain same. Protons never participate in combining with each other. It never does anything to the proton until unless that is fusion reaction जो हम नहीं कराने, ठीक है? So this number remains the same, but because it is accepting this electron, the number of electrons becomes 18. So now it has 17 protons but 18 electrons, and if you solve this, 17 positive charge will get cancelled with 17 negative charge and it will be left with 1 negative charge. So Cl is getting converted to Cl negative. This is gain of electron because it is accepting electron, right? So we can say that here chlorine is gaining electron and gain of electron is termed as reduction, right? So adding this thing to the difference which we started is reduction is gain of electrons, like we did, Cl gains 1 electron and becomes Cl negative, and oxidation is loss of electron, like we did, sodium loses 1 electron to form Na positive. Understood this much? Or any questions you would like to repeat, me to repeat any topic out of all these things which I have taught? बोलो, समझ आया? Yes. Yes, पक्का? But you need to remember this, that if an element is gaining electron, because electron is negatively charged, so it will have extra negative, okay? And this will show up here.
एंड इफ एनीथिंग इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका नेगेटिव कम हो रहा है, तो पहले तो वो इक्वल था ना सब, तो नेगेटिव कम हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव कम, तो पॉजिटिव बच जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतना ही वो ज्यादा पॉजिटिव वहां पर आता रहेगा। राइट, समझ आया इतना? यस, नाउ यू नीड टू टेल मी दिस। Suppose I have magnesium and I have oxygen and I'm getting this MgO. Now, can you tell me what is charge on magnesium here? 1. Why one? Zero. कोई भी एलिमेंट है अगर न्यूट्रल स्टेट में अकेला, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में यूल फाइंड 118 एलिमेंट्स, वो एज एन एलिमेंट कोई चार्ज नहीं कैरी कर रहे। जब वो कंबाइन करेंगे दो एलिमेंट्स, कंबाइन करने के बाद उनपे चार्ज डेवलप होगा बेटा। जब तक वो अकेले हैं उनपे कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं, उनके पास बराबर बराबर है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, और दोनों इक्वल नंबर में है। राइट, सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? Atomic number of magnesium. 12. That means this is having 12 protons and 12 electrons, and this will carry no charge. Akela atom will never carry a charge. O लिखने को तो आप O भी लिख सकते हो, लेकिन O never exists single atom के फॉर्म में. It is very reactive. O exists as O2. ठीक है, लेकिन O2 में भी this is not carrying any charge. ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस ऐसे है, मगर वही है, उसमें दोनों ऑक्सीजन के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, एंड दोनों दे आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, सो इट इज नॉट कैरिंग एनी चार्ज। नाउ टेल मी अबाउट MgO, what is going to happen here? Will you observe any change in oxidation state or change in charge of magnesium here when it is combining with oxygen? बोलो। देखो, एक बात अपने माइंड में क्लियर रखो, कोई भी चीज क्यों कंबाइन करेगी? व्हाट इज द नीड टू कंबाइन विद ईच अदर? क्या खुश नहीं थे क्या ये अकेले? व्हाट इज द नीड टू कंबाइन? सोचो, व्हाट कुड बी द आंसर? व्हाई आर दे कंबाइनिंग विद ईच अदर? क्या मिल रहा है उनको? टेल मी, व्हाट इज द बेनिफिट इन कंबाइनिंग? व्हाई आर थिंग्स गेटिंग कंबाइंड? दोस्त क्यों बनाते हो आप लोग? क्या फायदा है आपका? क्योंकि टेंशन नहीं होती, कुछ मुसीबत आएगी, मैम से डांट पड़ेगी तो दोस्त बचा लेगा। राइट, तो एक फायदा देखते हैं वो कि हाँ दोस्त होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं शेयर कर सकता हूँ, तो आपकी लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आती है, ऐसे आप परेशान हो जाते हो। वैसे इन एलिमेंट्स को इसीलिए दोस्त चाहिए, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, उनके पास है, सब अकेले भी रह सकते हैं, पॉजिटिव जितना उतना नेगेटिव भी है, किसी का अगर दोस्त नहीं है तब भी वो सरवाइव करता है। मगर फायदा ये हो जाता है कि जब दोस्त मिलेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये दोनों भी आपस में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं ताकि इनको स्टेबिलिटी मिले। तो प्रॉब्लम क्या थी इनको? इनको प्रॉब्लम ये थी कि इसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और इसके पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अगर दोनों को स्टेबल होना है तो दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लास्ट शेल में। ठीक है, अब अगर मैग्नीशियम को 8 रखने हैं लास्ट शेल में, तो ये कहता मैं 2 लूज कर देता हूं, क्योंकि मेरे को 2 लूज करना आसान है। ठीक है, ये क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि इसके लिए वो आसान है। और ऑक्सीजन को बोलो कि तुम अपने 6 लूज कर दो, पहली शेल तो फुल हो जाएगी। वो कहता नहीं, 6 तो बहुत ज्यादा है, आई कैन नॉट लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कहता फिर ऐसा करो, तुम 2 गेन कर लो, तुम्हारे फिर भी तो 8 हो जाएंगे। तो कहता ठीक है, मैं 6 लूज नहीं कर सकता, पर मैं 2 गेन कर लेता हूं। ठीक है, अब देखना इसी चीज को, आई कम बैक टू दिस स्लाइड ऑल्सो।
मैंने यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लिखी थी 11 से लेके 18 तक, जिसमें मैंने आपको लास्ट शेल में इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताए थे। तो देखो, अगर आप सोडियम को बोलोगे ये लूज वन इलेक्ट्रॉन, यू विल गेट स्टेबल, वो कहेगा फटाफट, बिल्कुल ऑब्वियसली आई कैन इजीली डू दैट। सबसे रिएक्टिव, सबसे खुश है वो कि ठीक है आई कैन लूज दिस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मैग्नीशियम, वो भी बोलेगा ठीक है आई कैन डू दैट, दो करने पड़ेंगे पर ठीक है आई कैन डू दैट। इफ यू आस्क एल्यूमिनियम, वो भी बोलेगा कर लूंगा। हाँ, इसके लिए जितना इजी था इसके लिए उतना इजी नहीं था, इसके लिए उससे भी कम इजी था, बट फिर भी जो उनको स्टेबिलिटी मिलके खुशी मिलेगी ना, दैट इज डिफरेंट। तो वो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि फाइन आई लूज दिस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी उनको मिलेगी, लास्ट शेल में उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आफ्टर लूजिंग दीज 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। फोर वाला कहता आई कैन नॉट डू दिस, 4 देने में बहुत मेहनत लगती है, तो उसको ऑफर मिलता है कि आप 4 ले लो। वो कहता 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने में भी बहुत मेहनत है, वो भी मुझसे नहीं होगा। तो ये ना लेगा ना देगा, ये शेयर करेगा। ठीक है। अब 5 वाले क्यों बोलते हैं कि तुम 5 लूज कर दो? वो कहता नो, बहुत एनर्जी लगेगी, इतनी नहीं है मेरे पास। तो कहता ओके, फिर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लो। क्यों गेन करेगा? ताकि टोटल 8 हो जाए। 6 वाले को बोला जाता है आप 2 गेन कर लो, 7 वाले को बोला जाता है आप 1 गेन कर लो। तो 7 वाला तो बहुत रेडिली तैयार है, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना है। 6 वाला थोड़ी मेहनत करेगा, 5 वाले को काफी मेहनत लगेगी, लेकिन एटलीस्ट 5 लूज करने से 3 गेन करना इजी होगा उसके लिए। ठीक है। तो ये 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स जिनकी लास्ट शेल में है, वो एक लूज करके या 2 लूज करके या 3 लूज करके ये चार्ज डेवलप करेंगे। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। कौन लूज करेगा? जिसकी लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके लिए आपको बस कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। If you have this much number of electrons, वो लूज करेगा ताकि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। एक लूज करेगा तो +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नेगेटिव को भगा रहा है, तो वो पॉजिटिव, नेगेटिविटी हटाते हो अपनी लाइफ में तो पॉजिटिविटी आती है। वैसे ये नेगेटिव चार्ज को भगाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव भगाएगा उतना ज्यादा पॉजिटिव आएगा। राइट? सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आपकी ऑक्सीडेशन होगी, जितना पॉजिटिव आप बनोगे, जितना नेगेटिव को हटाओगे अपनी लाइफ से। राइट? और ये आगे आपके पास 5 6 7 वाले, जो कि गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिविटी गेन करोगे तो आप पे भी उतना ही नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। इस ये नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहे हैं, -3 बन जाएगा। 2 नेगेटिव -1, 1 नेगेटिव माइनस 2 नेगेटिव है, -2, 1 नेगेटिव -1। दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। 8 वाला बोलता मैं तो ऑलरेडी फुल हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी की। कुछ होता है जिनको दोस्तों की जरूरत ही नहीं होती, वो ये होते हैं 8 वाले। तो ऐसे दोस्त होते हैं जो खुद सबकी हेल्प करते हैं, उनको पर किसी की हेल्प नहीं लेते, वो ऑक्सीडेशन वाले अच्छे दोस्त है, वो दूसरों की हेल्प करते हैं। कुछ बस दूसरों से हेल्प लेते हैं, दोस्त वो भी हैं। ठीक है, बस दूसरों से हेल्प ले रहे हैं, पर वो नेगेटिव वाले हो गए। ठीक है। और कुछ होते हैं शेयरिंग वाले, शेयरिंग इज केयरिंग, कार्बन फैमिली। तो शेयरिंग वाले बन जाओ। ठीक है, ना लॉस करो ना अपना गेन करो। ठीक है, इतना समझ आया? यही सारा रिडॉक्स रिएक्शंस में आपको हेल्प करने वाला है। राइट इट डाउन फास्ट, जो भी मैंने लिखा है थोड़ा सा साफ साफ लिखो।
Done? Raise your hands if still doing. All of you have done? Okay, some people. Okay. Okay, done now? ठीक है सी तो हमने ये किया कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन this was 281 282 283 284 285 286 287 288 one having 1, 2, or 3 electrons in their last shell lose electron to form +1, +2, +3 ions, and loss of electron is oxidation. Those having 4 electrons share their electrons. Those having 5, 6, and 7, they gain electron, and gain of electron is called reduction. And after gaining 3 electrons, 3 negative charge and 2 electrons, 2 negative, 1 electron, they get 1 negative charge. These are called cations and these are called anions. Got it? Is that clear? Yes. Okay. So we were doing this MgO. Now you are supposed to tell me what is the oxidation state on Mg. We did it is 0 and oxidation state on O2 is 0. And what is charge on magnesium now? Haji? +2. What is the configuration of magnesium?
So what it will do to get stable? It will, and if it loses two electrons, what charge will it carry? Negative charge दे देगा, negative भगा देगा, तो कौन सा charge आएगा उस पे? ठीक है, अगर दो नेगेटिव चार्जेस भगाएगा तो दो पॉजिटिव चार्ज उस पे आएगा, राइट? सो दिस इज +2. एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेगेटिव चार्ज को हटाना, दैट इज कॉल्ड oxidation, right? So this is doing loss of electron and this is termed as oxidation. Now, talking about oxygen, what is atomic number of oxygen? 8. Configuration? 2, 6. What will it do to become stable? Gain of electrons. How many electrons will it gain? 2. And what charge will it carry? -2. How much negative? 2 negative. And gaining of electron. This process is called क्लियर? इतना सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो, ऑक्सीडाइज हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में. अब इसको ऑक्सीडाइज होने में कौन हेल्प कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम दे रहा है उनको कौन ले रहा है? Magnesium is getting oxidized, magnesium is losing 2 electrons. So who is accepting those 2 electrons? Oxygen. तो मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करने में उसको जो हेल्प कर रहा है दैट इज ऑक्सीजन. जो उसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज ऑक्सीजन. So oxygen is called oxidizing agent here because it is helping magnesium to getting oxidized. This is oxidizing agent because it is helping oxygen oxidize. Helping, magnesium to get oxidized. समझ आया क्यों है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे? Give me the reason. Because it is helping the magnesium to get oxidized. How it is helping magnesium to get oxidized? What is it doing to help it? By giving two electrons. By accepting the electrons which magnesium, right? And what is reducing it? What is reducing it? Magnesium. And why is it reducing agent? Because देखो इधर पहले समझो फिर getting converted to Mg2 positive. ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. ऑक्सीजन जो है वो इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन करके तो मैग्नीशियम के दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है. मैंने जब ये क्लास मैंने कहा था अगर कोई देने वाला है तो डेफिनेटली reduction and oxidation, they are complementary to each other, right? Redox साथ में वर्ड इसीलिए किया है क्योंकि जहां जहां ऑक्सीजन होगी वहां रिडक्शन होगी. First few lines, boys. It's your chance now. अभी आप ही सब people are very
आप ही सभी को पता होता है। So I told you कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, डेफिनेटली कोई रिड्यूस जरूर होगा, उसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स कोई ना कोई जरूर लेगा। If magnesium is getting oxidized by losing electrons, this oxygen is getting reduced by these electrons. Right? यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ हो रही है रिडक्शन। जो चीज खुद उसको ऑक्सीडेशन में उसके साथ वाला हेल्प ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, और जो चीज रिड्यूस रिडक्शन में, मतलब इसमें कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका रिड्यूसिंग एजेंट बन, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के एजेंट हैं। जो चीज ऑक्सीडाइजिंग चीज रिड्यूस हो रही है, उसका रिड्यूसिंग एजेंट हेल्प साथ वाला। You know what is oxidation? I'm giving you this questions from your assignment. Have you received the assignment? MnCl2 plus 2H plus and you have to find the oxidized first three lines. Who needs the answer? All the smiling face. Give me the answer. Boys? Okay. Carefully now. What is the charge on this? Minus one. Minus 1. What is the charge? Zero. What is charge on this? Plus. Plus? How much? What is charge on this? Plus 4. Plus 4 होगा। Plus 4 होगा। Charge. Manganese का Plus 4 होगा। इधर plus 2 होगा। See. Look at this now. अगर आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, यू हैव टू पुट एक्स हियर। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है, which I've already taught you. So if you have 2 oxygen atoms, you have to multiply minus charge with 2, and overall this compound is not carrying any charge, so you have to equate it with 0, right? मैंगनीज जिसका हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, उसको x लिख दिया क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, बट वी हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स हियर, तो टोटल -4 चार्ज हो जाएगा, ठीक है? एंड दिस कंपाउंड इज नॉट कैरिंग एनी चार्ज, तो 0 से इक्वेट किया। x सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 0, सो दिस मैंगनीज इज carrying +4 charge. And here we have MnCl2.
Mn का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. दिस इज X. एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, दो क्लोरीन एटम्स पे -2 चार्ज हो जाएगा. एंड ओवरऑल मैंगनीज MnCl2 पे कोई चार्ज नहीं है. If I take out the value of X from here, this comes out to be 2. X is equal to 2. So actually you're having +4 charge on this manganese and +2 charge on this manganese. So what is this process called? If the oxidation state is getting changed from higher to lower, what is this process called? Is it oxidation or reduction? I've muted you because the voice was echoing. You can unmute it and give me the answer. Reduction. कैसे पता चला ये loss of loss of gain of electron. अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव +2 में जाने पे ज्यादा हो रहा है. I'm not audible, ji. ऑडिबल वैसे भी तुम्हारा आंसर गलत होता है तो फिर मैं ही बता देती हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर मैंगनीज जो है वो +4 से +2 चार्ज में जा रहा है बेटा. ठीक है. अगर पॉजिटिव चार्ज कम करना है, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. अगर पॉजिटिव चार्ज करने पड़ेगी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. Not audible. Not audible. Reduction. मैम आवाज नहीं आ रही हो.
Yes, no. Yes, No. no. Okay. Yes.